परिवार में आपका स्वागत है। आज हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे अगस्त मास के लिए। तो आज का जो Om पहला दिन Shanti, है, welcome ये everyone to सीरीज़ का Avekti जो Parivar. टॉपिक है, Today we are going to start a वो new रहेगा series, and the topic for the योग new तपस्या series व is वातावरण Transform का the परिवर्तन Atmosphere करो। with आज Volcanic का टॉपिक Yoga है Tapasya. लाइट Today हाउस is August 1st, 2023, जो and the पहला दिन topic है is अव्यक्त इशारे, Lighthouse and लाइट हाउस और Lighthouse. लाइट हाउस की शुद्ध Volcanic शक्ति से ही remembrance is a ज्वालामुखी powerful स्थिति होगी। stage of इसके लिए a विशेष lighthouse प्रयास and के lighthouse. अनुभवी बने, For this, शक्तिशाली especially बनो, experience जिससे आप being श्रेष्ठ as an अनुभव embodiment of ईश्वर knowledge भक्ति and become कल्याण powerful वृत्ति so that और all the desperate शक्तिशाली souls, वातावरण द्वारा wandering souls, तड़पती हुई and धड़कती हुई souls calling पुकारने out वाली आत्माओं experience में bliss, आनंद peace, and शांति और power शक्ति की through the pure and अनुभूति हो। benevolent attitude of अभी हम you, मोहिनी दीदी से elevated सुनेंगे। souls, and the powerful atmosphere. And now we will listen to Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. The month of August is starting. In the month of July, whatever Baba showed us the method, and with that method, whatever success is achieved. So the method and the success, both we understood very well. We also practiced it, and many aspects of these points came into our awareness. But one is that we make effort, and then the second is that we actually make effort based on the right method. So then whatever is the attainment that is received, whatever is the stage that should be created, that is possible only when we do it through the right method. There is a lot of significance of the month of August. It is also the month of Dadi Prakash Maniji. It is also the month of the pure festival of Raksha Bandhan. And these days, the month where you can become most elevated has also begun. So we can say in a way that it is one of such a festival which is very, very pure. And therefore, the avyakti signals that we have received, in that it is the point that we have to volcanic yoga tapasya. We understand in our intellect what is volcanic yoga tapasya. In English, we say volcanic, which is as if like volcano is emerging from the earth. So what is the aim? The aim is to create an atmosphere such that whatever attainment the souls need, they receive that. You can see that when a child is born, then the atmosphere of the home, that atmosphere has a lot of influence on his life. In relationships, in interactions where there is peace, if there is birth of a child in such an atmosphere, then the sanskars of the child will also be similar. But if there is conflict, if there is opposition amongst each other,
if there is atmosphere of anger, then the child also has those इतने तक sanskars की पौधा है, to the extent पौधे that को भी कहते हैं कि प्रेम से even पानी दो, the plants, they say you have to परंतु give them water with lot रोगों of के love, लिए but it also आकाश की needs रोशनी चाहिए, sunshine, it हवा needs चाहिए। air, it needs all elements. तो मनुष्य जीवन में So in the life वायुमंडल of का भी बहुत humans, प्रभाव है। there is lot of influence of the atmosphere. आज बाबा ने सेवा Today, केंद्र बनाए हैं, Baba has created these service सेंटर्स, centers. और दूसरा जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं And वो secondly, भी यहाँ whoever प्रैक्टिस stays in करते हैं। household, they also practice. तो जो वातावरण होता है So the environment, उसमें चाहे लौकिक रूप से whether in Lokik चाहे way आध्यात्मिक रूप से, or through spiritual way, दोनों तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। in both ways there is an influence तो उसमें of it. पहले दिन का अभ्यास है So the first day's कि homework लाइट is, हाउस और माइट practice is that you have to be lighthouse and lighthouse. आपने देखा है समुद्र You में must have seen in the ocean, लाइट हाउस होता है, there is a lighthouse. कितने लहरें कितनी So लहरें many उठती हैं, waves, so many waves touch each other, लाइट हाउस घूमता रहता है, उसकी strike each लाइट other. घूमती The रहती है, light of the lighthouse और keeps जो on भटकते revolving, हुए, and whoever are the wandering चाहे वो सेलिंग बोट्स हैं, sailing चाहे ships शिप्स हैं, or boats or whoever, सभी को डायरेक्शन मिलती है लाइट हाउस से। everyone gets directions लाइट हाउस from से the फिर पता lighthouse. चलता है From the कि हम lighthouse, राइट they जा get to रहे know हैं, whether we are going in the right direction or not. परंतु वो लाइट क्या है, However, what is that light बाबा within बता रहे us? हैं कि शुद्ध वृत्ति So की। Baba is saying it is the light of तो pure बहुत अच्छा है सारा, attitude, लाइट benevolent हाउस का attitude. मतलब So it's very अपने nice. मन की एकाग्रता, Lighthouse means that concentration of our mind. तो वृत्ति भी शुद्ध हो, So एकाग्रता the शुद्ध हो, attitude is also pure. भावना There is प्रेम की, कल्याण also की हो, concentration, the feelings of तो benevolence. उसकी जो शक्ति है So the power of all of वो these आत्मा together, को अनुभव होगी। it will तो be इसलिए जैसे experienced by कहते हैं other लाइट souls. हाउस, And so, और like they माइट say, हाउस lighthouse शक्तिशाली and might house, स्थिति से ज्वालामुखी to जो create a powerful stage of a lighthouse and might house. स्थिति हो, And ज्वालामुखी then स्थिति हो, your remembrance will be volcanic remembrance. विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी Especially experienced being as an embodiment ज्ञान of स्वरूप knowledge, like embodiment of शक्तिशाली, knowledge, and become powerful. शुद्ध वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, Pure and benevolent शक्तिशाली attitude, वातावरण द्वारा and through the powerful atmosphere, अनेक भटकती हुई या तड़पती many हुई desperate आत्माओं souls की or पुकार wandering souls or souls who are calling out, पुकार सुनाई दे उन आत्माओं की, you will be able to hear, तो उनको ऐसे लगेगा जैसे and they will आज़ादी मिली है, feel फ्रीडम मिला as है, if they are receiving freedom, as if अशांति they are से being मुक्ति है, liberated from peacelessness, from sorrow. उससे उनको अनुभव हो They will लाइट हाउस experience माइट हाउस की वाइब्रेशन से the vibrations of कि उनकी lighthouse, might स्थिति house. शक्तिशाली बने। Their own stage may become powerful. तो इसलिए कल से शुरू So करेंगे, आज भी that is why करेंगे, we will start this. Today also we will do some yoga. थोड़ा और गहराई में भी जाएंगे We इसमें, will go into a little bit more depth of this, और उस स्थिति में बैठेंगे and we will sit in that stage जितनी पवित्र, जितनी भावना, to the जितनी extent there is purity and elevated उतना दूर bhavna. से To that extent, उस from वाइब्रेशन से लोगों को अनुभूति distance, होगी, क्योंकि people will be वातावरण able ऐसा to बनेगा, experience the vibrations वातावरण because ऐसा the बनेगा। atmosphere will be created in such a way that from a तो मुझे distance, पता है कि people will आप be able सभी to को experience the इसमें vibrations. So I know रुचि that है, all of us have और ये एक interest तरह से in मनसा this, सेवा भी है। and this is also serving through the mind in a way. कहीं भी किसी समय Wherever, बैठे हैं, whenever we are sitting, अभी at तो बाबा whatever ने पकड़ time, ही दिया है,
Yesterday also Baba said संकल्प व्यर्थ न that जाए, not even a single thought बड़ा should be टेंशन रहता है, wasted. So एक there is a lot of संकल्प भी attention, व्यर्थ न जाए। not even a single thought. पर एक होता है व्यर्थ न जाए, But then one is it shouldn't go waste. Then, but then what to do? तो लाइट हाउस की स्थिति में अपने संकल्पों को स्थिर करेंगे। So in that stage of lighthouse, तो might व्यर्थ house, भी we नहीं will जाएंगे, stabilize our thoughts so they will not सफल go भी to होंगे waste, but they will also और be निधन की सेवा भी used in a करेंगे। worthwhile way, and कई unlimited प्राप्तियां होंगी service जो will हम also लोगों को happen through that. अलग अलग So many नसीबें attainments सुनने को mm, मिलेंगी। will be received and through the different ओम zodiac signals that we will listen throughout the month. Om Shanti. ओम शांति। अवैध मूल्य रिवीजन 1969 से Om फरिश्तों के Shanti. दर Avyak से Murli revision वरदान। from 1969 onwards. Heart-to-heart conversation, the hearts of the angels. अव्यक्त वाणी तारीख है 20 मई Avyak Murli, 1970। dated विद्याता 20th of May वरदाता दृष्टि से 1971. दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी की कहावत है। The stage of being a कैसी भी bestower तमोगुणी व and bestower of रजोगुणी blessings. आत्माएं आए, लेकिन The saying that the आपकी world सद्गुणी changes दृष्टि through से one's vision उनकी applies स्थिति to this time. उनकी स्थिति बदल No जाए, matter how उनकी Tamoguni वृत्ति बदल and जाए। Rajoguni आगे चलकर roles यह that come in अनुभव front of you बहुत may be, आत्माएं करेंगी, their world, their state, जैसे and यह their आवाज attitude उठाया हुआ should है change कि तीनों through लोकों your का Satoguni साक्षात्कार vision. कराया। As you यह भी progress अभी का further, गायन है। many आप souls लोगों के will सामने have आने this से experience. दृष्टि द्वारा In उन्होंने the मेरी खोज memorials, तो क्या, it is shown अपनी that they पूरी were जीवन given कहानी का a vision अवलोकन of the कीजिए। three worlds. जैसे शुरू में स्थापना के समय This ज्ञान is की praise of the स्थिति present time. नहीं थी, When they come नजर से in भी front हम of करते you, थे, they will तो know अंत में through भी your ज्ञान vision, की सर्विस करने not का just about the three मौका नहीं worlds, मिलेगा। but also जो about आदि their हुआ है complete वही life अंत भी story. आप लोगों Just द्वारा as at the चलता है। beginning, at the time of जैसे वृक्ष establishment, का पहले there बीज was not प्रत्यक्ष so much रूप में service होता through है, knowledge, बीच but में you वह used to बीज take उत्कर्ष everyone हो जाता है, beyond with just फिर your अंत में glance. वही बीज So प्रत्यक्ष रूप too, में at the प्रकट end, होता you है। will not have a chance तो to do आप service through आदि knowledge. आत्माओं में भी Whatever जो पहला happened in the फाउंडेशन beginning पड़ा is हुआ what है will happen वही through सर्विस you at अंत the में end. भी होनी है। Just as the seed of a अच्छा, tree is first visible, अभी दूसरी then मुरली है in जिसकी between it तारीख है becomes merged, 24 मई and at the end, 1970। that tree is visible in a पोजीशन practical में form. ठहरने से So too, the अपोजिशन के first समान foundation that was laid in you सर्व souls आत्माओं के of the सुख और beginning, that शांति service has to अतापति take हो, place again at the end. क्योंकि दुखहर्ता Acha, सुखकर्ता now के this is second Murli समकक्ष dated हो। 24th of तो May जो बाप का कर्तव्य 1971. वही The बच्चों का essence is कर्तव्य है, finishing a जो position विश्व by के staying कल्याण in करता your व position. सुखदाता है। उनके पास Have कभी you भी become कोई those who लहर give peace and स्वप्न में भी happiness to all अथवा souls? संकल्प में भी आ नहीं Because सकती। you are the long तो lost ऐसी and now स्थिति found बना रहे, beloved children व इस of the स्थिति में remover of स्थित sorrow रहते हो। and the bestower of happiness. Whatever जैसे is the नया Father's जन्म हुआ, task is बाप also दादा the के children's फजीलतों task. बच्चे बने, तो Those who सर्वशक्ति are ज्ञान की the संस्थान के benefactors of the पास कोई world भी प्रकार का and who संताप bring happiness आ to the नहीं world सकता। can never संताप experience अर्थात any दुख की waves of लहर sorrow तब तक in है their thoughts जब तक or even सर्वशक्तिवान in their बाप की dreams. स्मृति नहीं रहती, Are you creating अथवा such a उनके state, संतान or प्रैक्टिकल do you नहीं remain बनते हैं। stable in this stage? सुख के सागर बाप Since की you have संतान taken a को new birth, दुख की लहर since क्या you have महसूस become the होती long है, lost and now इससे found भी अनजान beloved children रहते of हैं। Bapdada, सुख की लहर you, में ही children of पीड़ा the मिलेगी, Almighty authority, माया can never की experience ओपोजिशन क्या any होती waves है। of sorrow.
There opposition are the का waves of निवारण sorrow when कैसे you हो? do not have the awareness of the opposition Almighty से सिर्फ Authority अ Father. शब्द निकाल दो That is, तो क्या हो when you जाएगा? do not become His पोजीशन children में in ठहरने a से practical form. ऑपोजिशन होगा ना? When you are the अगर children of the अपनी Father, पोजीशन the पर ocean of स्थिर रहे happiness, तो you फिर remain ऑपोजिशन ignorant नहीं, of even knowing what सिर्फ एक waves of शब्द sorrow प्रत्यय are. करना है, You अपने continue to पोजीशन move पर along in ठहरना, waves of happiness. यही याद की यात्रा है। Why is there opposition अच्छा, from Maya? आगे की मुरली कल The से solution to सीखेंगे। the ओम शांति opposition is शतम। very easy. Just remove one syllable from the word opposition, and what does it become? Will there be any opposition when you stay in your position? If you remain stable in your own position, there will not be any opposition from Maya. Simply remove one syllable. To stay in your own position is to stay on the pilgrimage of remembrance. We will continue tomorrow. Cha Om Shanti.